So, good evening, दोस्तों. Let's begin with today's session. So, look at the first question. Lake Urmia is located in which of the following countries? Correct answer is Iran. Recently, ईरान अपने हिस्टोरिकल ड्रॉट्स को फेस कर रहा है और लेक उर्मिया के ठीक ऊपर उसने क्लाउड सीडिंग की प्रैक्टिस की है. अब क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या है? एक आर्टिफिशियल मेथड है प्रेसिपिटेशन को एनहेंस करने के लिए, राइट? तो या तो पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए या फिर ड्रॉट को एड्रेस करने के लिए क्लाउड सीडिंग का यूज जो है वो किया जाता है, राइट? अब बेसिकली इसमें दो तीन सब्सटेंसेस यूज हम करते हैं. पहला तो है सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर का यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का. देन उसके बाद में ड्राई आइस का यूज किया जाता है एंड देन सॉल्ट का, राइट? तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर क्लाउड्स का होना जरूरी है. अब ये क्लाउड्स कौन से हैं? पहला तो है क्यूमुलस और दूसरा है निम्बोस्ट्रेटस, राइट? सो क्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स में इन इन सब्सटेंसेस को इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन है, वाटर ड्रॉपलेट्स का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ सके और उसके बाद में रेनफॉल को इंड्यूस किया जा सके, राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वुड बी फॉर बॉम्बे, दैट वुड बी ईरान, right? So look at the explanation part. Iran begins cloud seeding to induce rain amid historic droughts. Where? Over the Lake Urmia, right? So Lake Urmia is one of the largest inland lakes of Iran, located in the northwestern part of the country between the East Azerbaijan and the West Azerbaijan provinces, right? So we picked up this article from BBC and Down to Earth. Chaliye, now let's move on to the next question. So look at the question number 2. So just a moment, look at the question number 2. With reference to the inflation targeting framework under the RBI Act of 1934, consider the following statements. The first statement says, the RBI is mandated to maintain the consumer price index inflation at 4% with a tolerance band of plus minus 2. राइट मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है 6% और मिनिमम कितना हो सकता है 2%, राइट? सो 4 + -2, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. याद रखिएगा, आरबीआई यूजेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन. Second statement is, under the RBI Act of 1934, the Monetary Policy Committee MPC determines the inflation targets once every 5 years. No, that is not correct. See, the inflation targets are set by the central government in consultation with the RBI, and RBI is responsible to achieve those targets. Understood? So correct answer क्या होगा? Correct answer would be, like, statement number 1 is correct, but the statement number 2 is incorrect. So C for Calcutta would be the correct answer here. Look at the explanation part. So you can see this. Under the flexible inflation targeting framework introduced via the Finance Act of 2016, RBI must maintain CPI inflation at 4 ± 2. And look at the statement number 2. The inflation target is fixed by the central government in consultation with the RBI and not by the Monetary Policy Committee. So MPC's role is only to decide the policy repo rate and to achieve the notified inflationary targets. Understood? Chaliye. Now let's move on to the next question. So look at the question number 3. The Energy Transition Index, ETI, benchmarks countries on the performance of their energy systems and their readiness for the transition to clean energy. तो बेसिकली जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं. पहला क्या है? परफॉर्मेंस ऑन देयर एनर्जी सिस्टम्स. तो एनर्जी सिस्टम्स में किस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, प्लस देयर रेडीनेस फॉर द ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी. It is released by which one of the following organizations? So correct answer is World Economic Forum. So recently World Economic Forum published the Energy Transition Index, right? अब इस तरह के इंडेक्सेस यूपीएससी पूछते रहा है और ये बहुत ही क्रिटिकल इंडेक्स है. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर के बेहद ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है. याद रखिएगा, पहले पोजीशन पे है स्वीडन, राइट? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं पहली पोजीशन पे, और अमेरिका का 17th पोजीशन है और चाइना भी अच्छी पोजीशन में है, लगभग 2021 के आसपास में उसका रैंक है. वहीं इंडिया का जो रैंक है वो ड्रॉप हुआ है, राइट? सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन. इंडिया स्लिप्स टू 71 स्पॉट ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, राइट? सो स्वीडन इज ऑन टॉप और टोटल 118 कंट्रीज का असेसमेंट हुआ है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं सब टॉप में है. वहीं अगर हम बात करें लाइक चाइना की, सो चाइना रैंक्ड 12th while US ranked on 17th.
पाकिस्तान हमसे पीछे है, ये खुश होने की वजह हो सकती है आपके लिए, राइट? सो चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, question number 4. Recently, there have been discussions regarding the establishment of the regional benches of the Supreme Court of India outside Delhi. According to the Constitution, if Supreme Court is to hold its sitting at a place other than Delhi, the authorities, the authority to determine such places rest with whom? तो अगर सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस का एस्टैब्लिशमेंट करना हो तो ये अथॉरिटी किसके पास में है? दिस अथॉरिटी लाइज विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with the approval of the President of India. So C for Calcutta would be the correct answer, right? So look at the explanation part. It is given under Article 130. As per the provisions of Article 130 of the Constitution of India, the Supreme Court shall sit in Delhi or in such other places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President from time to time appoints, right? So आर्टिकल 130 में प्रोविजन गिवन है, इस तरह के डिस्कशंस डिबेट्स होते रहती हैं. सो एस्टैब्लिशिंग रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल विंडिकेट सिटीजंस फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, राइट? तो इस तरह के डिस्कशंस होते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए. सो याद रखिएगा आर्टिकल 130. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at the question number 5. Which of the following best describes the ethical concern associated with the green grabbing often seen in news? See, it refers to prioritizing environmental goals over the socio-economic justice. It is being practiced across Asia and Africa, right? So climate change mitigation के नाम पे जो like downtrodden people हैं, जो poor people हैं, उनसे उनकी land को grab किया जा रहा है. Clear? तो basically what is happening? Green grabbing refers to appropriation of land and natural resources for the environmental purposes like carbon offsets, biodiversity conservation, renewable energy projects, often by the powerful actors at the cost of the local communities' rights and livelihoods. So basically क्या होगा, जैसे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो इनके पास जब लैंड जाएगी तो लैंड किसके नाम पे जा रही है? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के नाम पे, राइट? लैंड एक्विजिशन हो रहा है. लैंड एक्विजिशन किससे हो रहा है? पुअर पीपल से हो रहा है. इससे बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि लैंड इनइक्वालिटी बढ़ रही है. तो लैंड होल्डिंग साइज किसका बढ़ रहा है? प्राइवेट प्लेयर्स का. और लैंड होल्डिंग साइज किसका कम हो रहा है? डाउन ट्रॉडन एंड पुअर पीपल का. क्लियर? सो इससे क्या हो रहा है? इससे लैंड इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है इंडिया में भी. सो ग्रीन ग्रैब ऑफ लैंड leading to increased land lending in India, says the report. So we picked up this article from Indian Express, right? So that's the reason we framed this question. Chaliye. Now let's move on to the next question. So look at the question number 6. The audit report of the finance accounts submitted by the Comptroller and Auditor General of India, CAG, to the President is examined by which parliamentary committee? Correct answer is Public Accounts Committee. See, Public Accounts Committee जो है, it is one of the oldest committees of the Parliament. It was first set up in 1921, right? So it was first set up in 1921 and Public Accounts Committee जो है इसका जो like स्ट्रेंथ है वो इस तरह से, लोकसभा में यहाँ से मेंबर्स आते हैं 15 और राज्यसभा से मेंबर्स हैं 7. तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की? दैट इज 22. एंड डू रिमेंबर दैट since 1967 it is like headed by the leader of the opposition party, right? तो जैसे प्रेजेंट में मिस्टर वेणुगोपाल के वेणुगोपाल जो है इसके हेड हैं. सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो हेड होगा दैट इज बाय कन्वेंशन द लीडर ऑफ द member of the opposition party, not the leader of the opposition party, the member of the opposition party, right? चलिए, ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का काम करती है, याद रखिएगा. सो पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज अ प्रीमियर पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया सेट अप इन 1921 दैट ऑडिट्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स टू इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी and its propriety, right? It consists of 22 members, 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha, elected annually via the proportional representation system, with the chairperson historically appointed from the opposition since 1967. Chaliye, now let's move on to the next question. So look at the next question. Question number 7. With reference to the Gulf Cooperation Council, consider the following statements. The first statement says, the GCC was set up in 1981 to promote the economic security and socio-cultural cooperation among its member states. Absolutely correct. Second statement says, the Supreme Council is the highest decision-making body of the GCC. Again correct.
The third statement is headquarters of the GCC is located in Riyadh, Saudi Arabia. Again, correct. So question is which of these statements given above is oblique are correct? So all these statements are correct here. D for Delhi would be the correct answer. Why we picked up this question? Recently अभी like फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के जीसीसी और इंडिया के बीच में एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है. सो इंडिया एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल साइंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? सो डू रिमेंबर. अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? टोटल 6 मेंबर कंट्रीज आर देयर, राइट? सो डू रिमेंबर, like Saudi Arabia, UAE is there, Oman is there, okay, Kuwait is there, Qatar is there, and so Saudi Arabia, UAE, Oman, Qatar, Kuwait, and एक कंट्री और कौन सी बच गई? दैट इज बहरीन, राइट? चलिए, now let's move on to the next question. Look at the question number 8. Mission 300, led by the World Bank Group, it is an initiative aimed at connecting 300 million people in sub-Saharan Africa to electricity by 2030, right? तो कितने लोगों तक के जो है वो एक्सेस टू पावर पहुंचाना है? 300 मिलियन पीपल, वेयर इन सब सहारन अफ्रीकन रीजन, राइट? तो 2030 तक के यहाँ पे एक्सेस टू पावर को इंश्योर करना है, और somewhere it is influenced by like India. So 5 powerful lessons from India's electrification success for the Mission 300. We picked up this article from the DD News, right? So connect 300 million people in sub-Saharan Africa to electricity by 2030. That is the ultimate motive of the Mission 300, which is launched by the World Bank Group. Chaliye, now let's move on to the next question. So question number 9, with reference to goods and services tax appellate tribunal, consider the following statements. The first statement says the Constitution of India provides for the establishment of the GSTAT under the Article 279A. That is absolutely incorrect. See, Article 279A establishes the GST Council and not the GSTAT. Clear? So first statement is absolutely incorrect. Second statement is appeals against the orders of the appellate authorities under the central and the state GST acts lie before the goods and the services tax appellate tribunal. This is absolutely correct. So question is which of these statements given above is oblique are correct? तो correct answer होगा B for Bombay. That would be only 2, right? So do remember. चलिए, now look at the explanation part. So you can see here the GS380, the goods and the services appellate tribunal, it was set up under the GST Act of 2017, right? And not under the Constitution. So statutory body hai, do remember. Now let's move on to the next question. So चलिए चलते हैं आगे. दोस्तों, it's going to be the last question of today's session, question number 10. With reference to the union budget of 26-27, consider the following statements. Basically what happened in the recent budget, सरकार ने recent budget में 3 duties, 3 कर्तव्य जो हैं उसको यहाँ पे establish किया है, right? तो इनमें से which of the following represents the 3 कर्तव्यस या 3 duties of the union budget 26-27? तो यहाँ पे accelerating and sustaining the economic growth, absolutely correct. Fulfilling people's aspiration, again correct. Ensuring inclusive development, also correct. The fourth one is ensuring the socio-economic and political justice to all. This is not there, right? ये basically कहाँ? It is there in the preamble of the Constitution of India. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3. So A for Ahmedabad would be the correct answer. Look at the explanation part. Just a moment. So you can see here, we picked up this article from the Hindu. So Union Budget 2026, Finance Minister Nirmala Sitharaman outlines 3 kartavyas in the first budget speech at the Kartavya Bhavan. This is the first time in the history of India that the Union Budget is being presented on Sunday. याद रखिएगा इसको. And it is inspired by basically जो fourth statement है, that is inspired by the preamble of the Constitution and not by the budget framework, right? So this was the last question of today's session. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे. मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.